नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज मेरे साथ एक प्रिय मित्र मेजर जनरल हरि पिल्लई हैं। मैं इनके साथ बहुत समय से नाता रखता हूं। ऑलमोस्ट 38-38 साल हो गए और उससे भी ज्यादा एक्चुअली टाइम हो गया है। तो हरि, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। आप पहली बार आए हैं यहाँ पे। और जो जनरल हरि हैं, ये इनकी जो कमीशनिंग हुई थी इंडियन आर्मी में, ये लाइट इन्फेंट्री जो मराठा रेजिमेंट की है उसमें इनकी कमीशनिंग हुई थी। इसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा रोल जो निभाया है वो मोस्टली नॉर्दर्न सेक्टर में निभाया है। ईस्ट में भी इन्होंने काम किया है और काफी ऑपरेशंस में इन्होंने पार्ट लिया है जिसका यहाँ पे उल्लेख नहीं किया जा सकता। ये कॉन्गो में भी वहाँ पे कमांड कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं उसमें। तो ये बहुत ही प्रोलिफिक एक प्रवक्ता हैं और बातचीत में और जियोपॉलिटिक्स में इनको काफी ज्यादा महारत हासिल है। ये एमफिल से सम्मानित हैं और काफी सारे जो मेडल्स हैं इन्होंने प्राप्त किए हुए हैं। तो जनरल हरी, अभी स्ट्रेट अवे हम जो टॉपिक बिल्कुल हॉट पोटैटो की तरह इस समय चल रहा है वो है यूएस ईरान की जो एक पीस डील हुई है। आई थिंक 14 पॉइंट्स हैं उसमें, और ये बस रिसेंटली 18-19 तारीख को ये कंक्लूड हुई है। लेकिन कुछ आधी अधूरी सी है वो, क्योंकि जो मैं समझता हूँ ये करीब लगभग 60 दिन का एक कह लीजिए विश्व को एक सांस लेने की एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 60 दिन का टाइम है ये सफिशिएंट है? ये जो माइलस्टोन्स इन्होंने बनाए हैं अपने, वो कंप्लीट हो जाएंगे, कि ये लगता है कि आपको ये कोलैप्स हो सकता है और फिर से जो पूरा विश्व है ये एक कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा? सबसे पहले संदीप धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। मैं आपका एक विविड फॉलोवर रहा है और मैंने देखा है कि इधर इंसाइटफुल नॉलेज में बहुत अच्छे और व्याख्यान से डिस्कशंस होते हैं, विच इज़ एक्चुअली एंडियरिंग टू मी। रही बात मेरा प्रोफाइल का, अ, जो भी फौज में 37-38 साल सर्विस करते हैं, हम सब कुछ ना कुछ करते हैं इस टाइम पे और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं। और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बाकी के लिए, बाकी लोगों जो जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में जो काम करते हैं उनके लिए फायदेमंद हो। इसलिए तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि आप जब मेरे को ये ऑफर दिया, मैं भी कुछ उसी के बारे में बात करूं। आपने देखा होगा कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट देन मिक्स करके बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि इट कैन रीच मोर नंबर ऑफ लार्जर नंबर ऑफ पीपल। पीपल, हाँ जी। या सो अभी आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हॉट पोटैटो बिल्कुल सही, क्योंकि हाल ही में जो इवेंट आप जो बोल रहे हैं वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप रहा वो। उसके जी। बाद अ, तकरीबन डिरेल होने को गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो सेकंड फेज जो चलना था उसके बीच में यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ एक कमेंट्स कर लिया जो वो करते हैं आप अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म में, जिसको आप कहें वो प्रेशराइज करने के लिए किया, जो भी मकसद से किया उसका इम्पैक्ट विद द नेगोशिएटिंग टीम्स जो होना ही था कुछ ना कुछ, बिकॉज दीज ओपिनियंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। some impact will always take place in it. And there was एक टाइम, एक वक्त ऐसा आया था कि लग रहा था कि हो सकता है ना हो, बट आई थिंक इतना स्टेक्स इतना हाई है और इतना उम्मीद है इस टॉक्स के नेगोशिएशंस में कि एवरीवन हैज बैकपेडल्ड अ लिटिल और कुछ ना कुछ उसमें प्रोग्रेस हुआ है। जी। बोला जाता है कि प्रोग्रेस सब्सटैंशियल है, इन द सेंस दैट नेगोशिएशंस में प्रोग्रेस सब्सटैंशियल या नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। हर एक ग्रुप कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर सब्सटैंशियल इस वक्त इसलिए है क्योंकि डाइवर्स पोजीशन में खड़े थे, जी। फेलियर होने का स्कोप ज्यादा था। फिर भी सम प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट्स हैव टेकन प्लेस, व्हिच इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग, एक अच्छी बात है। क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट जो क्लोज हुआ है, जिसका जी। नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी को कहे या इंडियन इकोनॉमी को कहे, वो काफी सब्सटैंशियल रहा है, काफी ज्यादा रहा है। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यू नो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे इन वर्ल्ड हिस्ट्री, if you were to look in because the closure of a passage, इतना 107 दिन का ये जो
क्या बोले हम्म, ये जो ऑपरेशन चला है इस जिसमें जो नुकसान है, डायरेक्ट नुकसान तो मेजरेबल है, इनडायरेक्ट नुकसान मेरे ख्याल से तो कुछ टाइम लगेगा हमको समझने में कि कितना है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम आते हैं जो मेमोरेंडम का जो जो एमओयू और ये जो ये दोनों टीम ने जो फैसिलिटेट किया कतर और पाकिस्तान ने, टू नेगोशिएटर्स वेयर देयर, वेयर एज द इनिशियल जो मेरा अंडरस्टैंडिंग में जो इनिशियल स्टेजेस टू गेट टुगेदर जो पाकिस्तान ने किया है, बट द सब्सटैंशियल नेगोशिएटर सीम्स टू बी कतर, एसेंशियली बिकॉज वो उसी ज्योग्राफी से आते हैं, वो उनको जी ज्यादा समझते हैं, एंड उनको डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये बाकी गल्फ कंट्री से, ईरान से, and जी they're also a proven and an older negotiator than the newcomer. So I think there is a lot of substance, a lot of this thing which has been brought in by Qatar in this. And the complexity, ये negotiation का complexity जाहिर है क्योंकि बहुत ही diverse position से कुछ जी कॉमन ग्राउंड में लेके आने की कोशिश किया हुआ है। एक आध पहले हम जब इसके जो स्पेसिफिक माइलस्टोन से जाने से पहले दो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ वो एमओयू के बारे में, जो 14 पॉइंट एमओयू आपने जो जिक्र किया जी उसी जी। के बारे में। क्योंकि सबसे पहले इसमें ये बताया हुआ है कि दैट्स सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी वो तो दैट्स अ मिलिट्री टर्म, द इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक टर्म, हम्म, जो लड़ाई जो चल रहा था उसको कंट्रोल में, उसमें उसको बंद करना पड़ेगा कि बाकी जो बाकी पॉइंट्स लागू करने के लिए, सो दैट वाज वन ऑफ द दिस थिंग। हम्म, उसी में ही प्रॉब्लम है क्योंकि इसराइल इज नॉट फुली विद इट, लेबनान हैज अ प्रॉब्लम, एंड ये वॉरिंग पार्टीज में सिर्फ डायरेक्ट नहीं है, इवन इरानियन प्रॉक्सीज आर इन्वॉल्वड इन इट, एंड दे आर जी टॉक, ईरान ये बोल रहे हैं कि हमारे जो सपोर्ट में है उनके ऊपर भी हमला नहीं होगा, एंड जी दैट इज अ वेरी टॉल ऑर्डर फॉर अ स्टेट लाइक इसराइल, या मुश्किल है कि इसमें करना। एंड इनका सबका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हम्म, चाहे इसराइल की बात करो, चाहे यूएस की बात करो, या चाहे ईरान की बात, एंड दीज आर ऑल जी सॉलिडिफाइड और बहुत स्ट्रक्चरली सॉलिड हो गया बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, मैं उसकी पहले वाली हिस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ, जी ये 107 108 दिन में भी बहुत ज्यादा रोबस्ट हो गया, ओपिनियंस हैव कंसोलिडेटेड, तो उससे नेगोशिएशन स्पेस जो है कम हो जाता है, एंड हर हम्म, एक पॉइंट को कौन जीता कौन हारा अगर 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 आप नेगोशिएशन में ले आओ तो मुश्किल हो जाता है कि इसको आगे बढ़ाने में, एंड दैट जी इज द बिगेस्ट रिस्क इफ यू आस्क मी इन द 60 डे दिस थिंग। दूसरा, एनीथिंग एनी कोई भी हम काम जब करते हैं उसको एक सक्सेस का स्कोप होना चाहिए, और मार्जिनल सक्सेस इट्स ऑल्दो इट्स एन इकोनॉमिक टर्म, हर दिन कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए, हम्म, तब उसका बढ़ोतरी उसका जो है ना अंत भी थोड़ा सा सस्टेनेबल होता है, थोड़ा सा अपीलिंग होता है, और लोगों का थोड़ा सा मोरल भी ठीक रखता है, टॉकिंग ऑफ द इन्वॉल्व्ड पार्टीज, है ना, जी चाहे स्टेटस हो या पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हो, वो भी तो उनको भी कुछ एक प्रोग्रेस मिलना जरूरी है, इट कांट बी वन साइडेड, कोई भी एक साइड में नहीं हो सकता। The problem here is the name, the fame, the stakes involved affect all these because the constituencies are so very rigid. You know ट्रू that is a very major problem that comes in. So first is in the terms of cessation of hostilities, some progress, as per latest report, has been made, and uh, even in Lebanon, I'm told in the last in the last couple of hours, it is kind of you know uh, permeated, and currently hostile hold. ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले 1 घंटे में शुरू ना करो, जी 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 बिल्कुल फ्रेजाइल होल्डिंग्स, बिल्कुल राइट, एक इंसिडेंट और शुरू हो जाएगा जी या बिल्कुल। और इट इज इवन टुडे डिफिकल्ट, इतना मुश्किल है कि कौन शुरू किया, कब शुरू हुआ, ये भी असरटेन करने के लिए काफी मुश्किल है, बट हम्म, nevertheless let us progress. So the first step is that the conflict is on hold, there is some kind of a cessation, कुछ हम्म, पॉज है, मैं स्टॉप नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉज बोल रहा हूँ, that's a better word to use in the current circumstances because it's too early, बहुत ही जल्द हम ओपिनियन देने से मतलब नहीं होता उसका, right? So that is the first thing that I would want to do that. The second thing is, मैंने बोला था छोटे छोटे प्रोग्रेस देना होता है, जो छोटे छोटे रिजल्ट देना होता है, हम्म, और इसमें दो रिजल्ट्स है जो ईरान मांग रहा है, जो मेरे ख्याल से हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। दीज ओके आर essentially 10 and 11 which will keep coming back to us to haunt us, ये बार बार आते रहेंगे। पैरा 10 ये बोलते हैं कि सैंक्शंस रिलीफ होना चाहिए, मैं कंसाइज में बता रहा हूँ, rather than reading the या complete बिल्कुल बिल्कुल statement. Basically the American treasury would have to say that give some kind of sanctions relief to Iran. That's one. So that means Iran क्या चाहते हैं, पहला स्टेप यूएस के साइड से हो, हम्म, you know. Now the complication is that we can also be looked at as a go back by the US.
isn't, matlab, as a large concession or I don't want to use the word defeat, but it is a large concession by the US, which is moving away from their stated position. True. That's a little complicated. And the second is that frozen funds, उसका कुछ release किया जाए. Now जी. these funds have been frozen for God knows how many years now. True. The start is बहुत 70s का से start है ये जो जी. funds थी. बोला जाता है कि while the direct is only about 10 to 12 billion in funds, if you were to look at the interest and the accumulated assets and all that, when you calculate, it may be to the tune of $100 billion plus is what is being told, right? Which is a Correct. large of money. So to look at it in another way, दूसरी तरह से अगर आप देखो तो 100 बिलियन देने का जरूरत नहीं है इनको या 12 बिलियन. इट इज एन इंडिकेटिव. नेगोशिएशन का प्रोग्रेस के लिए कुछ इंडिकेटिव दे सकते हैं. Now the talk is that there is some release, these 2 points have been agreed to, which is how the agreement or the negotiations have come on track. Correct. Right? So there is something to do. रही बात अभी आपने बोला कि the 60-day period, that's part of the initial understanding. But मेरे लिहाज से, you see, 60-day timeline is not what do you call a sacrosanct figure. Means एक पत्थर में लकीर काटा हुआ. ये negotiation इतना complex है कि आगे पीछे जाएगा. It is a reference figure if you ask me. So what is important is not the 60. What is important to me is the progress. Is it going, progressing? Because there are some issues which are easy, low hanging fruit जो हम फौज में बोलते हैं, और कुछ एक ऐसा भी है जो डिफिकल्ट ये है. आमतौर पर नेगोशिएशंस में प्रोग्रेस दिखाने के लिए लो हैंगिंग फ्रूट पहले दिया जाता है. आमतौर, इट इज नॉट अ नेसेसरी मैंडेट, बट just to show progress and keep everybody happy. That is the trend that is done. And the difficult ones, which is in terms of in this, the most difficult ones are the assurance to Israel. When you bring in the third party, the direct party to the conflict, the third party, which is now at an arm's length distance, if you ask me, not happy, evidently not happy, but not part of the negotiations directly, which is a very peculiar and a complicated position from Israel's point, because they also have a domestic constitution. उनका भी So the point of nuclear disarmament in some way, or a nuclear guarantee, let's put it as a guarantee, is a complicated issue. Yes. What is not spoken is about the missile capability of Tehran or of Iran. That is substantial. If you remember, आपको याद होगा शुरू में जब लड़ाई शुरू हुआ था, बोला था कि 70% 80% इनका खत्म हो. अभी बोल रहे 70-80% बचा हुआ है. The difference is so drastic. And ये भी इन्होंने दिखा दिया इरानियंस ने कि उनका जो वेपन सिस्टम सॉफिस्टिकेशन एंड टारगेटिंग इंफॉर्मेशन करेंसी इतना ज्यादा इतना मैच्योर्ड हो चुका है कि दे हैव बीन एबल टू इफेक्टिवली टारगेट बोथ इजराइल एंड यूएस बेसिस. तो ये छोटी मोटी कैपेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल, which can be discarded hoping like wished away. No, it can't be. So this is an unwritten, it is not part of the memo if you see it. It is just not been spoken about. Yes. But to my understanding, iske bina some addressing will have to be done of this capability, some assurance will have to be done of this capability. This is one issue that is. I also would want to flag one more. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा. That is the trust deficit between the parties. वो तो बिल्कुल बहुत बड़ा. एक बहुत ज्यादा trust deficit है इसमें. Because twice they have been attacked when the negotiations were going on. The commencement of the attack both times, whether it is last year or this year, February 28th, there was movement towards the negotiation when the conflict started or when the attack started. So they are very, very guarded. The Iranians have a reason to be, distrustful of everybody on the table. And secondly, they've also had substantial losses in terms of decapitation strike and, there's the entire top leadership, more or less, which has been taken away. So these are not easy positions from where to negotiate. And there will be a shadow रहेगा इनका complete negotiations के ऊपर ये shadow रहेगा, which is the risk why it can get derailed. So this is going to be a complex and arduous, difficult, बहुत मुश्किल process होने वाला है. और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये 60 दिन 70 दिन से हम बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना. Progress of negotiation अगर ठीक ठाक है तो हमको खुश होना चाहिए. मतलब when I say हम बोलते हैं तो the global population should be happy that progress is there rather than the calendar.
तो ये एक चीज मैं इधर स्पष्ट करना चाहूंगा कि 60 दिन या 50 दिन से हम मतलब टाइम टेबल और कैलेंडर पे जोर ना दें, और रेसोल्यूशन पे हम उसको देखा जाए। दैट वुड बी अ बेटर वे ऑफ तो लुक। इसमें जैसे इजराइल को बिल्कुल बाहर रखा गया, ठीक है, तो आपको लगता है कि जो इजराइल यूएसए के साथ मिल के अटैक कर रहा था, एक पार्टनरशिप में ये वॉर चल रही थी, तो अगर इजराइल को बाहर रख दिया गया, और जिस तरह से आपने भी कहा कि भाई इजराइल का इंटरेस्ट है उस पूरे क्षेत्र में, तो क्या ये डील जो है उनके बिना चल पाएगी? क्या वो सेटिस्फाइड है? मेरे ख्याल से तो बहुत डिससेटिस्फाइड है इजराइल। आप सही बोल रहे हैं। अभी ये आपने जो सवाल पूछा है, ये बहुत मुश्किल है इसको जवाब देना। इट इज नॉट अ वन वर्ड आंसर, नाइदर इट इज अ वन पैराग्राफ आंसर। प्रॉब्लम यह है कि मिलिट्री एसोसिएशन, मिलिट्री ट्रीटी वाइज एंड लेजिस्लेशन वाइज, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसराइल और यूएस के बीच में, राइट। अगेन आप हिस्ट्री में चले जाए, 2018 में ओबामा में एक लेजिस्लेशन लेके आया था ऑन ऑन द ऑन दिस थिंग दैट इज ऑपरेटेड 2028, हम्म। and as per which it is, I think, $3.8 billion per year is the financial support for the military that is to be given to Israel. US ने दैट्स राइट। 3.8 बिलियन डॉलर सालाना देना चाहता होता है, हम्म। जिसमें 3.3 बिलियन डॉलर उन्हीं का इक्विपमेंट लेने के लिए है, मीन्स अमेरिकन इक्विपमेंट इसराइल। हम्म। And 500 million is for joint equipment, like the Iron Dome, and there is a lot of this thing. And there is also an NDA Act, that's the National Defense Act of America, which is coming up 2027 का जो draft is already out. हम्म। उसके तहत वो बोल रहा है कि the integration is going to be so definite between the two that Israel military or the government military बोले वो मतलब it is actually replaceable words in the Indian military. Will have access to not only American technology, it will also have access to American research, ओके। right? So if that comes through, there is no other country in the world which has got that access to this thing, and it is going to be the draft is out. So to say that Israel will not be considered, or Israel is not, Israel's interest will not be kept, I don't think is going to be it's not a possibility. What is going to happen is that there will be tough negotiations, and there will be concessions made, हम्म। timeline delays made, some kind of a agreement, but it is based on the interest of Israel in the current political setting in the United States. It is difficult that they will be ignored, हम्म। because unka lobby, they have a lobby, Israeli lobby in या America. बिल्कुल बिल्कुल। The financial backing is very strong, the political जी। backing is strong. And आप ये भी देखो, one of the chief negotiators, the Jewish lobby is strong. I don't necessarily like to bring religion into it, but unfortunately when you talk about Israel and Iran, it is the whole, the causes, या cause itself is religious in nature, so रिलीजियस नेचर, avoid या। that, right? So it is inconceivable in that whole this thing, that the interest of Israel will not be looked after. That's a pipe dream, right? The question is, how much is it going to be moderated against certain realities which the Iranians have crossed? That closing of the Strait of Hormuz has been a pain, both economically and other way, in the literal बिल्कुल। sense, for the world over, is a fact of life, can't be ignored. 107 दिन में सबका मतलब ऐसे कि तैसे हो गया था, द ऑयल हम्म। मार्केट, द इकोनॉमी, द टेंशन, एवरीथिंग वेंट हेयर, है ना? तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी समथिंग ऑफ, so they have a leverage in military terms or in diplomatic terms, which they have used very effectively, right? And there is a pressure because of the economic reason. अभी आप देखो हाल ही में, today the oil price in the US, the Brent crude, it's come to $78, right? या। It had gone close to 120 जी। because of the war. Now people are breathing a little easy. The gas prices at the bung, as they call it in the US, had gone to $4 plus, and then everybody will end up, in smoke, more or less. The backlash was very palpable. So these are reasons why they are toning down. Because pressure is what leverages. Pressures are what brings you to the table. Not because Iran is a superpower or something else. That it या। can't be solved out by the US. There's no तो that is not. इसी में एक क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ आप, कि आपने जैसे बात की यूएस इलेक्शंस की, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हो सकता है उसके प्रेशर में आके ये जो एमओयू किया गया है, और उसको हो सकता है सस्टेन भी किया जाए, क्योंकि इलेक्शन है वहां पे नवंबर में। Definitely कुछ तो है उसमें. तो There is some. अगर ये प्रेशर हट गया नवंबर के बाद, तो हट ही जाएगा वो प्रेशर, तो फिर क्या होगा? क्या फिर से तांडव होगा 2027 में, 2027 में?
क्योंकि 2028 तक कोई इलेक्शंस नहीं है यूएस में, तो बिल्कुल ब्रीदर मिल जाएगा उनको 1.5 साल का ऑलमोस्ट। तो मैं ये बताऊं, ये कहूंगा कि आपका कंसर्न जरूर जेन्युइन है, राइट? बिकॉज बट इट वो इसी आई डोंट थिंक इट विल गो लाइक दैट वे आइदर। देयर आर सम रीजंस व्हाई आई थिंक इट वोंट हैपन। अभी देखो हु इज लीडिंग द यूएस नेगोशिएटिंग टीम। जी इट इज द वाइस प्रेसिडेंट हु इज जी आल्सो अ फोर रनर फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल रेस। जी सो इट इज हिज पॉलिटिकल फ्यूचर। अगर वो जब कुछ कर कर आके आ गया और इधर से वो लेफ्ट राइट कर दिया, so there's a stake that comes in. So he is now invested in the whole thing. Now I'm just one man example. My point is I'm only illustrating it. What I'm trying to say is that, the Republican Party also has got a stake in it. The president must be outgoing, will be outgoing. The lead negotiators may be outgoing. The main, but जी the person leading this thing is not outgoing. Political future is tied to this tenure, जी and this tenure is till 28. It is not till 26 November. 3rd November में जो election होगा इसका, वो there's no cutoff date for it. So that is one aspect which we need to do. The second is that pressure will still be there. You go back to conflict, the gas prices will go up, oil prices will go up. बिल्कुल दूसरा, there is also a psychological component on it. एक बार आपको अगर relief मिल जाता है ना कोई लड़ाई से, there is a tendency, human tendency, I suppose, and a political tendency, I am sure, to continue with the good effect of it rather than going back to the degraded position that they were before. That there is also, so while I can't state with any authority that ye hoga nahi, but there are certain issues that will which will favor, and the world opinion, the public opinion, the pressure of China. There's a global political pressure, diplomatic pressure, economic pressure. These pressures will definitely be there. It is just not going to wipe out just because of 3rd November election हो गया. It cannot happen, right? पर आपने And जैसे अभी पहले इसके कहा था कि वहां पे हजबुल्ला हैं, इधर यमन में हouthis हैं, तो ये प्रॉक्सीज भी कुछ कर सकते हैं, I agree. और एक चिंगारी फिर से उठ सकती है, और उसमें इजराइल फिर से एक बार क्योंकि काफी लोगों का इंटरेस्ट ये भी रहता है कि ये शांति ना बनी रहे। Correct. So आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. आप अभी ये देखो कि everybody wants to have their relevance. यस And हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि there are so many aggrieved parties in it who want to prove a point. या Lot of them at the cost of peace. Which is why the whole peace process itself is थोड़ा सा difficult or dangerous है. That I told you then there is an underlying, I said there is a shadow of distrust, right? And चलो हम ये डिस्कस ही कर रहे हैं तो हम ये भी बोलें कि false flag operations are also being done even in this conflict. बिल्कुल बिल्कुल So it is not as if that जो दिख रहा है वो कर रहा है. किसी को फंसाने के लिए दूसरा भी कर सकता है. So the complexity is absolutely there. बहुत There is no question about it. बहुत ही ज्यादा बड़ा कैनवस है ये. But मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ अलग है. I'm saying there is something called war fatigue in the global economy or in the political circles. People wanted to close down. The US president, he is outgoing. When he is going, he wants legacy, a positive legacy. He doesn't want to be a troubled world and going. No. Let me go back a couple of years, or the beginning of the last year. He wanted to be nominated for the Nobel Prize for Peace. यस So he can't leave a legacy of confusion of this kind in the Middle East, or Mina, what do you call it today? It just not so. So there are both sides of the coin. There is a balancing factor. So some of it helps or मदद करते हैं peace के लिए, और some, including participants or parties to the conflict जो है वो they are against it just to prove their point, their relevance. अगर कंप्लीट पीस आ गया लेबनान और गाजा में, ये हिजबुल्लाह और अपना इनका क्या होगा? their relevance also goes down. या दैट्स ट्रू। Right? तो Their relevance. ये बताइए अगर मान लिया, हाइपोथेटिकली मान लिया कि यहाँ पे कुछ हो जाता है, एक बार एक और विस्फोट हो जाता है, एक और शुरू हो जाता है, लेट्स से यूएसए गोज बर्जर्क, और हिजबुल्लाह या हौतीज या हमास कुछ कर देता है, या ईरान ही कुछ करने लग जाता है, क्या इफेक्ट होगा? हम इंडिया कैसे उसको हैंडल करेगा, चाइना किसको हैंडल करेगा? कि दोनों की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहां काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। देखो, this conflict has brought in some things of energy security to the fore. बिल्कुल आगे लेके आए. The strategic petroleum reserves the world over. Yeah.
I'm not talking of the International Energy Agency only, which were the ones who were keeping the मतलब वो strategic petroleum resource वो रखते थे. बाकी countries भी रखते हैं. India और China are not part of it, but we hold not we Chinese hold substantial. In fact, they hold the largest amount of Yeah, yeah, petroleum resource. I think it's close to 1.4 billion barrels, which is held in China. yeah. And this does not hold unka commercial stocks, reserves are not included. It's massive. True. So they have capability of going about 130 days without the oil. In fact, आप अगर देखोगे तो ये भी आपको पता लगेगा कि during the conflict, this 107 days, Yeah, the purchase of oil by China, जो crude has reduced yeah. वो ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था कुछ समय के लिए तो उन्होंने. because they and we couldn't. Yeah. India couldn't. Giving a direct example, because उन्होंने cost देकर बंद कर दिया. They have जी, the जी. reserve to draw. हमें हमें because if our economy would have broken down, because हमारे पास we don't have, especially of gas, we don't have storage capability, so our economy would have ground to a halt. So cost was not the issue for us. We had to get the oil. So it's two different outlooks, Yeah, Vinitha. So बिल्कुल. the point that I'm trying to make is that this has taught us something. We have also got into agreements with the UAE and all. अभी Mangalore में हाल ही में we are having stocks. We are permitting stocks of outside companies and nations within India. Similarly, holding Indian stocks outside abroad. So that we are जी. finding methods to do it. The same is with all countries, even China and all that. But China has done one more thing. They जी. have more taken a complete this thing with Russia. Their Yeah. agreement for whether it is gas, oil, or oil. और They और उनकी have, लोकेशन भी उनको फेवर करती है. yeah, and they have a lot of agreements, very substantial agreements with substantial quantities assurance being assured to them. So that is what. So the long and the short of it, simply put, कि whether the agreement succeeds or not, there are some lessons which have been learned, and that is going to change the world over. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Your construction business for storage tanks underwater and whatever else is going to increase everywhere, because safety of your oil stocks will become Absolutely. important. बिल्कुल, बिल्कुल. There's no question of anybody now taking a chance one more time. People True. will develop their reserves. It will become important. There's no doubt about it. अच्छा, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं पूछना चाहूंगा आपको कि जो एमओयू साइन हुआ है, इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, इसकी कोई बात नहीं हुई. उसमें इनके जो प्रॉक्सीज हैं, जिनकी अभी मैंने नाम लिए, पूरे मिडल ईस्ट में हैं, चाहे वो हाउथीज हो, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, अ, उनका भी कुछ नाम नहीं लिया गया और ना ही उनका कोई सॉल्यूशन निकाला गया. ऐसा कुछ कोई बात ही नहीं हुई. तो ये आपको लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये एक्चुअली ईरान इटसेल्फ इज डोमिनेटिंग दैट, और आपको लगता है कि जस्ट स्टॉप गैप ये 60 डेज का लेके यूएसए ने एक टाइम ले लिया कि इलेक्शंस भी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है? I don't like. I think I'll have to explain in a little bit of a different manner. मेरे को ये नहीं लग रहा है कि that Iran becomes super strong because of that omission of this thing. It won't happen, because you see, Israel के लिए that will not be accepted, and neither will it be acceptable to the US True. in some way. But it is Iran is saying that उनका sovereign right है to develop their own systems and to बिल्कुल, ensure बिल्कुल. deterrence. Which is what the comment which President also made, in the run up जी, to the negotiation. G7 ने बनाया था जी. He said that this thing, that when Saudi Arabia can make their own missile, why can't these guys? That is the kind of this thing. So he, what it indicates two things. One is it indicates a little toning down of the rhetoric of the to give peace a chance. Yeah. That is one, and genuine concerns है वो infect करता है. The second thing that indicates is that it is still not out of the mind. ये मत सोचना कि ये that is also an indication to Iran कि there are some concessions possibly that we will give, but this is very much on the table. That is my interpretation. It is just not. See, after all, everything in diplomatic circles in the global stage is posturing, right? Very true. Tell them that हमने डाला नहीं है MOU में, but it's not really off the table. There will be some concessions, but you will also have to tighten your belt or something of that kind, right? Because if you look at it, there is no other genuine way to pacify Israel also. And मैंने अभी बोला था कि the substantial legislations are there to protect Israel, and there is no indication, कोई भी indication नहीं है कि that the US is backtracking on any of those the NDA Act and all that. It is just not there.
So Israel is likely to continue as a substantial US partner. However, there is also an indication to Israel that all your whims and fancies are not going to work. Mhm. So there is a pushback that has come on from the political side of it. However, it is matched by Prime Minister Netanyahu's unpopularity. He is likely to go off. November mein, that will also be the next election, which you have to keep a True. watch out. Very true. Right? 26 US election से ज्यादा confusion इसमें होने वाला है. And इसमें, the Likud party, the Ben Gurirs and all of those gentlemen who are there who are so anti, warmongering or Yeah. very strong, saying public opinion trends say that they are going to get a setback. Now, public opinion trend is a trend. Till the time as the elections come out, you True. can't be telling कि इसका effect क्या होगा, impact क्या होगा. जी But जी. but the point is, again, finally, the solution is a balance. It is Mhm. not either. So, हम जो बोलते हैं normally, there's no perfect solution. It is going to be a satisfying solution. Satisfying. A little bit of here, a little bit of there, Very right? true. Very true. But the thing is, you have to be an optimist in this Yeah. under the circumstances, because there is so much of damage that has been caused and so much of anxiety caused in the world that there is so much of currency to make it succeed. And there is also very big pushbacks taking place whenever there is a move against reconciliation, which means that there is it's a marginal difference, but that pressure for reconciliation and reconciliation and cessation of hostilities and progress is slightly higher than the war. The people who want to prove their point, whether it is Hamas or Hezbollah or this thing, because that's the way I look at it. Right? Disruptions, जैसे आपने बोला था, proxies, false flag, to be expected. Slow progress, but definite progress. Not 60 days, maybe an extension as part of the agreement, or the subsequent agreement. But as long as the progress, meaningful progress is made, I think everyone benefits. And that seems to be the trend or this thing, because some slides have been accepted both by the US and by Iran. If you leave the rhetoric away, even, Galibaf trying to walk off from today's Birkenstock, meeting in the जी. morning because of whatever reason, but they all came back. They didn't fly out of Switzerland. The technical team is in position. They Yeah. said the negotiation will take place. They've also have this hotline to Hormuz and that Lebanon, what is that group? It's called a contention group or something. So there's a hotline being established because they expect problems there. Yeah. That's true. It is to resolve those problems to these, and there is a political oversight over these negotiations, the technical team. So they have put in an architecture of some kind, Yeah. which indicates that they want progress. And war fatigue is not a joke. It's Not a joke. something potential. बट And देखिए, मैंने जैसे 2018 से 2020, ओके, 2018 to 2020 मैंने सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे थे, नॉट जस्ट लाइक दैट, बेस्ड ऑन सम स्टडीज, कुछ मैंने मॉडल्स बनाए थे उसके ऊपर बेस्ड ऑन, एंड आई केम टू अ कंक्लूजन कि 2025 2025 से 2035 is going to be a very very difficult phase for the world. और समवॉट उस तरह का कार्यक्रम ऑलरेडी इफ यू सी जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो चल रही हैं। और इनफैक्ट एक थ्योरी मैंने और भी लगाई थी कि जो 7 अक्टूबर का जो अटैक था, जो हमास ने जो इजराइल के ऊपर किया था, बैकग्राउंड में कहीं पे चाइना खड़ा हुआ था, क्योंकि इफ यू सी द ओवरऑल जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में इस समय आया है वो चाइना आया है। ईरान, अगर लोग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईरान वॉर जीत गया और यूएस को हरा दिया, अगर आप ध्यान दें तो वहां पे 1 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, पुल्स और इस तरह की बड़ी बड़ी फैसिलिटीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई हैं। even अ, water, even हाँ, water, पानी. वाटर की फैसिलिटीज, वही सब सब मिला के इतनी Yeah. ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, हजारों की संख्या में लोग मरे हैं। और इवेंचुअली क्या हुआ, यूएस का लॉस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो पूरा फोकस था साउथ चाइना सी से, चाइना क्या चाहता है, दिस इज माय डोमेन, आप यहाँ नहीं आइए भाई, आपको जहां जाना है, जो करना है, जिसके, सो दो आई कॉल इट अननेसेसरी वॉर्स। तो आपको उन्होंने अननेसेसरी वॉर में इन्वॉल्व कर दिया, जिस तरह से
यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को इन्वॉल्व किया यूक्रेन में, चाइना ने इन्वॉल्व कर दिया आपको यहाँ पे, और ये मिडिल ईस्ट का जो क्वागमायर है या दलदल जो है, इससे यूएसए को निकलना काफी मुश्किल हो गया था। और दैट इज द रीजन जो मई में प्रेसिडेंट्स मिले वहां जाके चीन में, और उन्होंने उसके बाद इमीडिएटली बाद आके आप समझ लीजिए एक तरह से इसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस आई थी इस बातचीत में। I तो tend to I tend to agree with you that even though China may not have started the process of this conflict, but definitely they have used the conflict to strengthen themselves. And that is बैकग्राउंड में रहे, क्योंकि सी yeah, and a wise method major also. gainers, they are the major gainers. Correct. Primary So, factor, secondary factor, I can tell you, is to derail India, Middle East, Europe economic corridor. Okay, because that was giving एक टक्कर दे रहा था जो Right, इनका जो चाइना की खुद का जो अपना पूरा रोड्स एंड रेलवे और सबका नेटवर्क है जो, उसको काफी ज्यादा उससे घाटा होने वाला था। तो काफी सारा सी चाइनीज बहुत ज्यादा दे, इफ यू उनको आप अगर स्टडी करेंगे उनके लीडर्स को, उनके एकेडमिया को, उनके, तो दे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत डीप स्टडीज करते हैं। जिस तरह से उन्होंने जो इराक वॉर या जो मिडिल ईस्ट की जो वॉर हुई थी 90s में, उसको जिस तरह स्टडी किया है, किसी और देश ने उस तरह से उसको स्टडी नहीं किया है। सो बहुत बढ़िया तरीके से आपने, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने बात की है, और काफी अच्छे पहलुओं पे आपने बहुत ही ठहराव से समझाया है हमें। सो थैंक यू सो मच जनरल पिल्लाई कि आपने हमारे पास आए, और पहली बार आए हैं, आते रहिए। और इनफैक्ट मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि आप कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि ही इज वेरी वेल रेड पर्सन, इज अ लर्नड मैन, तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप बताइए जिस तरह के टॉपिक आपको इनसे सुनना चाहते हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं, और उस तरह के टॉपिक हम जो है आपके सामने लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर thank कमिंग you. जनरल That was पिल्ले, एंड been, थैंक यू सो मच। been a नमस्कार, privilege. सत श्री अकाल, जय हिंद। Been a privilege, and thank you.